Namaskar, hello, and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone and interactive program. And this is our special webinar series, Listening to Learn. I'm Tanvi Khurana, and here we are with session number 52. And today's session is very special. I'll tell you the reason, because we are going to discuss the topic brain, an exploration like no other, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मस्तिष्क एक खोज. कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन एंड इट्स नॉट इवन मैन मेड. वेल वी ऑल नो दैट. और अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ह्यूमन बॉडी का. बहुत सारे आप सभी ने सुने होंगे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं. उनकी वजह क्या होती है. और जो मस्तिष्क है हमारा, उसमें बहुत कुछ चलता है. कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन आज तक हुआ है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है. पर मुझे पता नहीं कि ये पूरी तरह सच है या नहीं. और बहुत सारे मिथ भी रिलेटेड हैं ब्रेन से रिलेटेड. अगर आपके पास कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए. हमारा नंबर है 8800440559. इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9, 10, 11 एंड 12 पर, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जो कि है NCERT ऑफिशियल. उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं. और एक और ट्विटर हैंडल है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वो है DBT_NBRC. हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है. आइए आपका परिचय उनसे करवाना चाहेंगे. वी हैव डॉक्टर अर्पण बैनर्जी विद अस. A very warm welcome to you, sir. सर है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम हरियाणा से. और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं सर से पूछने के लिए. अगर आपके पास भी कोई है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए. 11 बजे तक हम यहाँ मौजूद हैं इस बातचीत के साथ जो कि है ब्रेन से जुड़ी हुई, ब्रेन एंड एक्सप्लोरेशन लाइक नो अदर. लेट मी प्लीज इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम, एंड नो मैटर वेयर यू आर placed, you can watch it on our YouTube channel, which is NCERT official. And this is for Indian diaspora as well. Not only for the people who are staying in the country, but even if you staying outside the country, you can watch it. This program is a production by DESM, that is Department of Education in Science and Mathematics, NCERT. इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने का श्रेय जाता है DESM को. और हमारे साथ मौजूद है हमारे होस्ट, हमारे गेस्ट डॉक्टर गगन गुप्ता. He needs no introduction. Sir, a very warm welcome to you. Thank you, Tanvi. Thank you. So I'll request Dr. Gagan Gupta to introduce this program, to introduce our guest, and what are we going to talk about in a very brief manner to all our viewers. Sir, over to you. नमस्कार दोस्तों. अगस्त 2021 से शुरू कर आज हम 52वें एपिसोड पर हैं, 52वें सत्र पर हैं. हमने इस सीरीज़ में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेशन किया है, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो बैटरी से हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो. आप लोगों के सुझाव हम सबको मिलते रहते हैं लगातार. आपके पास ईमेल एड्रेसेस अभी आपके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उस पर आप अपने सुझाव देते रहें. और आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, और हम उनको समावेशन करने का पूरा प्रयास करते हैं. ये प्रोग्राम आज 52वें सत्र में है. दोस्तों, इस हफ्ते नेशनल ब्रेन अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है 12 से 19 मार्च के बीच में. और इस प्रोग्राम का मुख्य विषय है कि ब्रेन अवेयरनेस वीक इज द ग्लोबल कैंपेन टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्रेन रिसर्च. ब्रेन, द वर्किंग ऑफ ब्रेन, हाउ डज ए ब्रेन वर्क, what are the limitations of brain working, etc., etc. All those issues we'll be discussing today. We'll be taking up your questions. Friends, today is a National Sleep Day as well. This National Sleep Day is organized, is celebrated last Friday, on every last Friday before the summer equinox, and today happens to be the last Friday before the summer equinox, that is March 22. So I welcome my friend, a young man of the country, Arpan Banerjee. I'm very happy in inviting you. It's our pleasure in having you here in our studios today. It's a great day for us, my dear friend Arpan. Friends, let me introduce you with Arpanji. Dr. Banerjee, Arpan Banerjee, professor at the National Brain Research Center, NBRC,
which is an institute of excellence by the government of India. Gurugram obtained his doctoral degree in 2002 in nonlinear dynamics from the Florida Atlantic University, United States of America. Dr. Banerjee did his postdoctoral studies at the Center for Neural Sciences and the National Institute of Health, United States, where he developed statistical tools that capture the coordination of neural dynamics during perception and action tasks. We thank National Brain Research Center, Gurugram, for collaborating with us for this session today. Dr. Banerjee's primary research interests include theoretical and computational neurosciences and functional brain imaging. Dr. Arpan joined NBRC in 2013 and has been the principal investigator of the Cognitive Brain Dynamics Laboratory and has trained a large number of professionals, including several PhDs and postdoctoral fellows in the area of brain dynamics using EEG, MRI and MEG technologies. Dr. Banerjee sits in the editorial board of journals such as Neuroimage and Frontiers in Computational Neuroscience and is the recipient of the Rama Lingaswamy Fellowship and Innovative Young Biotechnological Award from the Government of India. Dr. Banerjee is also associated with the Ashoka University, Sonipat. Welcome once again, Dr. Banerjee, to our studios for today's session on brain, Mastish ke Khoj. It's all yours now. थैंक यू सादर प्रणाम सबको एंड एनबीआरसी के तरफ से आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं एंड ब्रेन अवेयरनेस डे में हमें बुलाने के लिए धन्यवाद. Actually, maybe I should start with the first myth that तानवी जी pointed out कि हमें बोला जाता है कि हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 10% ब्रेन यूज़ करते हैं. आइंस्टाइन ने अपना सब कुछ पूरा ब्रेन यूज़ किया था, इसलिए वो आइंस्टाइन है. तो ये बात जो है ये सबसे बड़ा मिथ है. ये इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. आप जितने जल्दी इसको अपने दिमाग से बाहर कर दे तो ही अच्छा है. तो लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सारे लोग जितने भी लोग जिंदा है, till we are dead, we are using the full of our brain, 100% of our brain. With that note, I would like to start my today's talk, and this is our, in the first slide you are seeing the campus that we have, a National Brain Research Center, which is a institute of excellence, and we train PhD students and master students. Masters in neuroscience we give, that degree is. And for PhD, our trainees have done very well and have been placed in different institutions, both India and abroad. With that, I would like to start with the first thing that I would want to say, that we all learn about the 5 senses in school. We learn about vision, we learn about audition, smell, taste and touch. These are जैसे कि आप बोलते हैं कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. सभी के एक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आईज है, आपका ईयर्स हो गया, आपका नोज हो गया, आपका टंग हो गया. लेकिन आपको कभी ये लगा कि आपका अगर ये ऑर्गन सारे चीज कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करती है? तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा ब्रेन एक्चुअली क्या करते हैं. इस ऑर्गन्स के पीछे जो सर्किट्स है, जो न्यूरल सर्किट्स है, जो कंट्रोल सेंटर्स है, वो कैसे कंट्रोल्ड होते हैं. तो पहले इसको समझने के लिए आपको मैं ये पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि इसमें आप 2 पिक्चर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑन द योर लेफ्ट यू आर सीइंग 3 काइंड ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट्स विथ सर्टेन एजेस. On the right, you also see the same objects which are reoriented in different angles. Now, if I tell you what is this, what you are seeing, the first thing that you will report to me in the left is that you are seeing a triangle. But the triangle on the left actually doesn't exist, right? On the right, when you see the right image, it is very clear there is no triangle. But the left, it is as crystal clear as possible that there is a triangle. Now, what are the kind of processes, क्या होते हैं आपके ब्रेन में कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ताकि ये 3 ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, जो कि राइट साइड में है. तो आज जो हम लोग जिस तरह से हम लोग साइंस को डेवलप करेंगे, मेरे को लगता है कि आप सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत इसके लिए आइडिया होगा कि ये कौन सा ब्रेन की जो प्रक्रिया होते हैं, कौन सा प्रक्रिया के माध्यम से हमें ये दिखने को मिलता है.
तो ये सवाल जो मैंने रेज किया यहाँ पे कि ये जो आपका एक माइंड है जो आपको अलाउ कर रही है इसको देखने के लिए एज ए ट्रायंगल, इट्स नॉट ए सिंपल क्वेश्चन. It's till a long time, like till about till the last 100 years before, this question was part of because we couldn't record from the brain very well. Partially the reason for that is that. But this question has intrigued both philosophers, both religious leaders, just name it all, right? So where does the mind come from? So if you look in this picture, these are two Greek philosophers, and we have in Indian philosophy also this question has been raised. For example, Advaita Vedanta as well as Samkhya. So now in the left you are seeing Plato, who kind of proposed that brain is the center of all mental processes, versus Aristotle, who proposed that heart is the locus of all mental function. And ये सवाल जो है हम लोग भी काफी बार हमें बोला जाता है कि अपने दिल से मत लो, आपका दिमाग लगाओ कुछ काम में. तो इसका ये जो क्या सच में हार्ट के माध्यम से कुछ होता है, हार्ट कुछ कंट्रोल कर सकती है, हमारे जो माइंड है इसको क्या हार्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये सवाल इतना सिंपल सवाल नहीं है. जैसे कि अगर आपके पास कुछ इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ औजार ना हो, लेकिन लास्ट 100 इयर्स में जो हमें मिला है कि हम एक्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं ब्रेन से, तो मोर और लेस वी आर सर्टेन, यस देयर इज सर्टेनली दैट द ब्रेन इज द सीट ऑफ ऑल मेंटल काइंड ऑफ प्रोसेसेस. बट ऑफ कोर्स एज वी आर learning new, as we are developing new technologies, not only heart, a lot of, you might have heard this gut brain axis. So lot of things that are related to your stomach also is kind of affects the brain. So in an essence, the whole body is a very complex organ, but yes, the brain is sort of the master controller of all these organs together. Now what is the symmetry that is in our bodily anatomical structure that allows the brain to control all these organs? So first, if we look at the neuroanatomy or the anatomy of the body in general, what you see is that there is a signal which comes at a level like here as a hierarchical level, then it goes to the receptor level. जैसे कि आपका कोई टच किए आप स्किन से, so आपका जो टच रिसेप्टर स्किन्स में होते हैं, तो वो आपका जो सिग्नल्स है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहले भेजते हैं, फिर उसके बाद ब्रेन में भेजते हैं. तो इसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, जो सेल्स हमारे बॉडी के स्किन में रहते हैं. उसके बाद जो या फिर ये similar kind of receptors are in our eye also. So inside the eye there is the retina, which has the rods and the cone cells which collects these pieces of information and sends it back to the brain. Then there is also in the ears there are certain cells similarly. These are all the receptor cells which takes the signal and sends it all the way up to the brain. But interestingly, for all these circuits except the one that is smell, it follows the following path, that you have a signal, you have a receptor, then there is a structure called thalamus, and it goes to the cortex or the brain. The smell is very special. जैसे आपको पता लगा कि कोविड के टाइम हमारे स्मेल पहले चले जाते थे. इसका रीजन ये था कि हमारा जो न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर सेल्स थे वो नियर टू द नोज, it had direct projections to our sort of brain. So when those virus attacked the neuron cells in the nose, it can actually reach the signal quickly to your brain, and hence lot of us lost the smell. So anyway, so the circuit that you are seeing has this basic symmetry across all the different kind of sense organs. Now you are start to getting kind of a understanding that I raised in the first set of slides, that if you see the brain, what does the brain do beyond what the sense organs do, right? So all the sense organs are effectually mapped at the level of the brain, at the level of the cortex, through some of these fibers which we call the neurons or the brain cells. Now what do each level that I proposed, from the level of the receptor to thalamus to the brain, do? So if you look in this symmetry, so if you look at the level of the receptors such as the cells of the skin versus the the ear cells or the ones the retinal cells in the eye, it all operates at the level of the signals. Then when it goes to the brain, there are these two levels that we call. One is the level of the percept, which is the way we are perceiving our world, the environment, and the third level is the level of the concept.
through the way which you are building up the concept of the triangle or rectangle or whatever that you want to see in the world, right, in the outside world. So these two levels, the level of the percept and the concept, this is where really the brain processing is involved. This is where we need brain processing, and if we don't have the brain operational, for example, in kind of clinical or pathological conditions, these are the effects that you are going to see. For example, in certain cases of stroke, we are not able to speak properly because the way our this integrative system, the speech systems are, they kind of interact with our audition, the hearing system, as well as the muscular system of our jaws, and cannot make this transition. So the brain essentially, in some kind of a nutshell, does a lot of this processing which are by very definition very integrative in nature, जो जिसमें सब कुछ मिलाना पड़ता है, एक मिला के सब कुछ का एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है, यही ब्रेन का खासियत है. तो ये जो हमारा जो ब्रेन का जो आज के डेट में जो न्यूरोसाइंस जिसको हम बोलते हैं एज ए डिसिप्लिन, कैसे हम लोगों को मालूम हुआ कि ये जो ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जैसे ब्रेन का प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया हम बोलते हैं, ये जो सेल्स न्यूरॉन का करते हैं, कैसे हुआ. तो जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी और सांतियागो रामोन y Cajal, they developed a lot of these microscope technologies through which they could stain certain cells, by which you could see these brain cells under a microscope. And we identified, and particularly Ramon y Cajal identified, that the cells he saw under a microscope are actually doing something fundamental to the processing of the stimulus for the environment. So he proposed that not only the cells are actually involved in a lot of this processing, for example, your complex set of perception, emotion and cognition, but these are also participating as a part of a network, that they make some kind of assemblies. जैसे हम लोग एक साथ एक टीम में जुड़ के काम करते हैं, तो वो जो चीज है, वो जो कॉन्सेप्ट है, ये सांतियागो रामोन y Cajal जी ने पहली ये प्रपोज किया था. So from these two works of these two gentlemen, we certainly came to know that a lot of this processing of the brain are actually happening at the level of the neurons. Now, how do a particular cortical neuron represent the environment? जैसे कि एक सिंपल सी हम एक स्टिमुलाई हम लोग कह सकते हैं कि एक bar of light such as the one that you are seeing here. So I can orient the bar of light in different orientation. और ये जो आप right में देख रहे हैं, ये एक Nobel Prize winning work of Dr. Hubel and Dr. Torsten Wiesel का है. तो जिसके लिए 1960s में उनको Nobel Prize मिला था. तो उन्होंने दिखाया था कि जैसे ये हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, जो ओरिएंटेशन चेंज करते हैं फ्रॉम दिस क्लोज टू 90 डिग्रीज टू द 0 डिग्रीज, cells are actually increasing. A specific cell is coding for a particular orientation. In this case, this cell is maximally coding for an orientation of 45 degrees. और ये जो आप रिकॉर्डिंग दिख रहा है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं एक न्यूरॉन का. सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्शन पोटेंशियल्स. सो द वंस देयर इज अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग. सो द एक्शन पोटेंशियल फायरिंग frequency is increasing, and hence we can say this particular cell is very special for this particular orientation. Now from the orientation the question arises, and if we plot all across the different kind of orientation sort of patterns to which this cell actually sort of responds to, you can plot a graph like this, that this particular cell will be responding maximally to this, but it is also responding in terms of action potentials to all the nearby directions, and if it is like 90 degrees it is or 180 degrees it is responding less, right. So now the question is, from the processing of the edges, and this neuron is situated in the back of our brain. This is the area typically we find this neuron. This is in the visual cortex. And one more snippet I want to give you, that this recording was done in an anesthetized animal, which is a cat. Now even that means, even under anesthesia, our visual system, you can place something, the stimulation in the retina of the animal, and your visual system is still working. So that is a thought number one that you know you need to keep in your mind, that जैसे anesthesia ऐसी चीज है जिसमें आपका consciousness चली जाती है,
medically speaking, but yet your visual cortex is still responding to the different orientations of light. Now from here, how do we understand from the orientations of light to the triangle that your mind is making? तो इसके लिए हमें जो थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स में जाना पड़ेगा कि एक सेल से ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो जरूरी है जानना कि बाकी सारे सेल क्या कर रही है, या एंटायर ब्रेन एरिया क्या कर रही है, या एंटायर ब्रेन क्या कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरा ब्रेन हमारा एक्टिव होता है, नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन और सम 10% ऑफ द ब्रेन एट एनी पार्ट ऑफ टाइम। सो ये सब के लिए हमें थोड़ा दूसरे किस्म का टेक्नोलॉजीज यूज करने पड़ेंगे, जो कि हमें पूरा एक व्यू दे पूरा ब्रेन के बारे में जानने के लिए। So if you look into the brain, as I said, this neuron is one particular very small cell that you are kind of looking at here on the left. Then in the middle here, you are looking at this curved structure of the brain where you have these folds, and which we call the gyri and sulci. The neurons are kind of perpendicularly located. This we call the pyramidal neurons. They are located like this. And this is the zoomed out version of the brain, the entire brain, and certain portions of the brain area do get active specifically to particular tasks, such as if you are like watching something, it will be the back of your brain which is here. If you are doing some kind of movement task, this will be something in the in this particular area which is the motor cortex. So now the question is, how do we image this in a human brain without actually doing some kind of surgery or hurting a human being? So there are technologies such as EEG and MEG, electroencephalogram and magnetoencephalogram, through which we can do this. The electroencephalogram or the EEG measures electric fields that are circulated in the brain, and the magnetic encephalogram, the MEG, measures the magnetic fields that is also associated. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक जब करंट होता है उसके आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल के माध्यम से जनरेट होता है। तो ये मैग्नेटिक MEG जो मशीन है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाती है। Now we can also do it at different levels for these animals, which I showed you already, but interestingly at different levels we get representations for the different kind of behavior that we do. We get representations for the cells, we get representations at the network of cells which we can measure through the EEG and MEG. Now EEG and MEG जो हम लोग humans में करते हैं, इसका एक और खासियत है कि इसमें हमें पूरा ब्रेन का एक्टिविटी इकट्ठा एक ही साथ दिखने को मिलता है कि पूरा ब्रेन का एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ते हैं, जैसे कि और एक टेक्नोलॉजी है जो MRI, जिसके माध्यम से हम लोग ब्रेन का एक वेरी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर हमें मिल पाता है, जो शायद आप लोगों ने कोई डॉक्टर्स क्लिनिक में फेस किया होगा कि और फॉर नी और एनी काइंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी कैन जनरेट वेरी फैंसी वेरी हाई रेजोल्यूशन images. So with these images which we can merge with the EEG and MEG, and we can generate very accurate maps with which how our brain activities are changing over time and space. तो ये एक पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में 1996 में, जिसमें दिखाया गया था कि जब हमारा सेल्स एक तरह से लाइंड अप हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल्स, तभी जो EEG और MEG का जो सिग्नल हमें मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये सिचुएशन में आप जो टॉप वाला सिचुएशन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स आर काइंड ऑफ आउट ऑफ सिंक विथ ईच अदर। व्हेन दे आर कमिंग इन सिंक्स, दे आर एक्शन पोटेंशियल्स, वी सी ए लॉट ऑफ फायरिंग और हायर अमाउंट ऑफ EEG kind of signal here. In this case, if we see all the action potential are nicely lined up, then we see this kind of a sinusoidal pattern, like a sine wave or a cosine wave we start seeing, and this is something that the EEG also does. So when we look at human EEG, we will see certainly this kind of sine wave patterns, and this looks somewhat like this. और इसका भी एक खासियत है कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, जैसे हमें डीप स्लीप का स्टेट में है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड बोले तो इसका जो पीक टू पीक डिस्टेंस है इस वेव का, ये ज्यादा होते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी जो रिपीटेशन हो फ्रीक्वेंसी होता है कि वे वेव्स कब अपना एक टाइम पीरियड खत्म करती है, तो इसका जो एक मिनट इसका
ओके, गॉट माय पॉइंटर। तो ये जो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी कम होते एम्पलीट्यूड ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होते हैं, वर्सेस वी आर जस्ट इन द asleep state or the drowsy state. It start as you are seeing that amplitude is decreasing but frequency is increasing. At a relaxed state, such as probably you are now, where you are listening to me, and this is the signal that you are going to get. This is what we call at the alpha frequency, which is around 10 hertz. And then if we are at an excited state, which might be me because I am excited to talk to all of you, this is the kind of state of my brain where the amplitude is further decreasing and we can see a increase in the frequency. And ये इसमें दिखा गया है कि बाद में जो practicing meditationers भी है उनके भी higher frequencies such as gamma frequencies में हमें दिखने को energy मिलता है। तो now this is at the population level we can measure. Now the question is how do we actually quantify this or how do we measure this kind of activity? तो एक सिंपल सा तरीका है जो हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, और आप इधर आप देखेंगे तो ये जो EEG एक्टिविटी है इसको हम लोग सोच सकते हैं कि ये this activity particular if you take into account, this is a summation of different sine waves of different kind of amplitude and frequencies, such as it is being shown here. So these are sine waves as you see from here, from this row to the top row, these are all sine waves, right? So sine waves everybody knows, everybody understands a sine wave. It has one frequency and a particular time period. When we sum these sine waves up, we can generate a complex, more complex kind of wave pattern such as this which we find here. So any kind of wave that you see in nature can be broken mathematically to a function of sine waves, a sum of sine waves with different amplitude and frequencies. And this is a very fundamental way to think about waves or signals in general in the environment. It was proposed by this French mathematician and physicist Joseph Fourier, जो कि हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिनका फिजिक्स मैथ्स का डिग्रीज है वो लोग पढ़ते हैं, बट इन जनरल नाउअडेज और इंजीनियरिंग में भी ये पढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये सभी सारे जो एल्गोरिदम्स है यूज करते हैं, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स है उसको यूज करने के बाद हम ऐसे प्लॉट्स बना सकते हैं जिसमें विथ फ्रीक्वेंसीज वी कैन सी द पावर इन ईच फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि एक साइन वेव आपका हो गया 10 हर्ट्ज में जैसे बताया, दूसरा साइन वेव हो गया शायद उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी में 4 to 8 हर्ट्ज, उससे आगे वाले फ्रीक्वेंसी में गामा फ्रीक्वेंसी में 40 हर्ट्ज। ये सारे फ्रीक्वेंसी हमें दिखने को मिल जाते हैं और एक एक फ्रीक्वेंसी का अलग अलग से एम्पलीट्यूड मिलते हैं। और ये जो डेटा आपको मैं अभी दिखा रहा हूं ये एक्चुअली MEG से मिला हुआ है जो हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, और इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हम जब बचपन से आपका जो एजेड स्टेज तक डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे ये वेव्स चेंज होते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं जब हम बचपन में हमारा जैसे 18 to 30 इयर्स एज में हमारा जो अल्फा वेव्स है ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होते हैं, और जब 66 to 88 इयर्स एज रेंज में वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी कम होते जाते हैं यहाँ पे। And this we can also represent it, this kind of waves. Now these waves that we have represented the energy, we can also see this across time, how the energy of the waves are also changing over time. And this idea came from another Belgian mathematician who is in Princeton University right now, and her name is Ingrid Dobeschies, and she has developed these wavelet techniques through which we can image how the frequency or the energy of the waves are changing over in time. So with these two sort of mathematical techniques we can understand how the brain waves, we can measure the brain waves and tell a lot about how our brain works in general. एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ब्रेन को समझने के लिए, ये सिग्नल्स को समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट है फंक्शनल सिग्रीगेशन। ताकि जैसे सिंपल से भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जैसा है कि एक एक मॉड्यूल एक एक काम करती है। तो ये आइडिया पॉल ब्रोका बोल के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था कि पहले ये जो हमारा उन्होंने देखा था कि हमारा जो एक लैंग्वेज एरिया होते हैं वहां पे अगर लीजन रहते हैं कि कोई इंजुरी से या कोई इन्फ्लेमेशन से, तो वो हम लोग कुछ देर के बाद वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो जाड़ में आप ब्रेन देख रहे हैं, तो ये एक पेरिस में एक म्यूजियम में रखा गया है। ये किसी का ब्रेन है जिसमें यहाँ पे एक बड़ा लीजन है फ्रंटल लोब में, जहां पे जिसके कारण ये बंदा बोल नहीं पाता था, खाली एक ही शब्द बोल पाता था, वो है टैन टैन टैन, समथिंग लाइक दिस, राइट।
नाउ बाद में काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट में इन्होंने काम किया और बाकी सारे जो आज को हमें दिखने को मिलता है ऐसा ब्रेन मैपिंग का जो डिफरेंट एरियाज जैसे विजुअल एरियाज इन द बैक, टेम्पोरल एरियाज डूइंग लॉट ऑफ हियरिंग रिलेटेड प्रोसेसिंग, स्पीच area doing such as the Broca's area doing a lot of speech processing, and there are a lot of decision making areas in the frontal cortex, areas that are particularly useful for our mathematical abilities. So these kind of areas are also you can understand the brain in different modules. But there is one catch, that if the brain is indeed in a completely a modular structure, then how does it talk to each other but because it needs to also talk to each other, all these different areas. Because why? Because when you are hearing me today, you are not only hearing my voice or you are seeing me, my gestures at the same time, you are combining both of them at the same time. So where does this communication occur? So for that we need to understand the brain also needs to integrate all this information, meaning जैसे कोई हम जैसे किसी को information भेजते हैं, email भेजते हैं, phone करते हैं, तो इसी तरह का कोई conceptual, कोई communication strategy रहेगा different areas का, जिसके माध्यम से brain एक area के साथ दूसरे area का बात कर सकते हैं. तो यही जो नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूं कि सेम एक्सपेरिमेंट जो आपका जो ट्रायंगल वाला था, तो उस एक्सपेरिमेंट जब हम ईईजी के माध्यम से हम लोग किसी के ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर किया गया था, एंड दिस इज वर्क डन बाय कैथरीन थैलम बॉड्री इन पेरिस, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996. एंड व्हाट शी सॉ दैट जैसे कि हम लोग, मैंने आपको पहले दिखाया जैसे कि हम लोग टाइम फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स कर सकते हैं, कैसे एनर्जी वेव्स में चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा जब हम लोग इल्यूसरी ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल एक्चुअली नहीं था, यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेन का एनर्जी है 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस अदर सिचुएशंस व्हेन यू शो ए रियल ट्रायंगल और व्हेन यू आर सीइंग नो ट्रायंगल, दिस एनर्जी इज इवन रिड्यूस्ड. सो इट मीन्स दैट द वे दैट द ब्रेन इज एक्चुअली piecing this information, this frequency based information, this oscillatory information to make meaning out of structures that it is seeing in the environment, right? So this is the very simple terms. This is the known problem of perceptual binding, which means that how brain uses different kind of objects and binds them together to make a meaning out of it. And one of the this work was very fundamental because this work first proposed that the way the brain oscillates, different areas oscillates, and we can see these oscillations via EEG, because they synchronize, as I showed you earlier, the oscillations are happening or the rhythms are forming because all these brain action potentials are at some level lined up together. So this synchrony is a mode to communicate among these different brain structures. So this is the first thing that this particular paper proved for once and for all. So ये एक दूसरा वाला जो चीज है कि मैंने बोला कि ये कम्युनिकेशन एक एरिया के साथ दूसरे एरिया में भी हो सकता है, तो इसके लिए ये दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना पड़ेगा, जिसमें ये पिक्चर में मैं दिखा रहा हूं कि ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पहला वाला पिक्चर है एक फेस का, जो नीचे वाला पिक्चर है कोई रैंडम एक ऑब्जेक्ट का. ये लेकिन बट you will realize once I flip this, if I rotate the picture by 180 degrees, you will see that the figure B is actually a rotated version of the 180 degree rotation of the figure A. तो ये दोनों पिक्चर में एक ही खासियत है कि अगर आप जो फेस वाला पिक्चर देखें और नीचे वाला जो रैंडम ऑब्जेक्ट पहले आपको मैंने ये सिचुएशन में दिखाया था, इसमें पिक्सल्स सब सेम ही है, सेम नंबर ऑफ ब्लैक पिक्सल्स, सेम नंबर ऑफ व्हाइट पिक्सल्स, बट अगेन द ब्रेन इज टाइंग अप ऑल these images by binding all these images to make you realize there is a face in the top part and there is nothing like a face in the bottom part. So again the question comes to our mind, how do those kind of binding appears? And again, lo and behold, the gamma frequency at 40 hertz were identified here, as you see in this picture. Again we see similar kind of wavelet like patterns, the plots I am showing, energy in each frequency in the y axis, and in the x axis I am plotting 0 is the time
time point when the stimulus comes, such as the face or this particular thing here. So, and again you see there is an increase of 40 hertz frequency, 42 all the way to 60 hertz frequency, which is this gamma band here, much more compared to this scenario when a random kind of object is shown versus a face is shown. So again it means that there is an enhancement of neural synchrony, which is the way brain areas communicate to each other. More sort of, we can also apply some other sophisticated mathematical tools which we call coherence and correlation, with which we can look at, these are the EEG sensors and the frontal part of the cortex, which is the front side of our brains, versus the back sides of our brains. If you see these black lines, they essentially mean they are actually communicating to each other, these black lines mean. So the communication gets higher between these sensors, versus in this picture which is when you are not seeing the face, which is this random object, there is a decrease in this communication. Okay, so this is kind of the general principles of how this works. So I just gave you some kind of historical perspective of what are the basic ways we can understand neuronal oscillations. Now in the next part of next 10-15 minutes, I will talk about what kind of research that we are doing in NBRC using this kind of concepts, and what are the things that we have discovered till now. So to understand that, so these are snippets from some of the work that has been highlighted in the print media. This was on the left is the international media highlighting our work on multisensory integration. How do we bind different kind of auditory and visual senses together? Now to show this this effect, there is one problem it seems. Let me see. Maybe we can hear this. So I will play this video again for you. So most of you may be reporting that this you are hearing as a tha. Now if you all close your eyes and listen to this video, if you close your eyes and listen to this video, you may be hearing a pa. So in what has happened during when I played the video, I had done a trick here. I have taken the articulation, meaning the lip movement of ka, and I have superimposed that with the sound of pa of the vocalizer, this person who was incidentally one of my first students, and the perception you get is something which is not in the environment, which is actually illusory. So like that triangle, your brain is totally making this up. And we know this kind of concepts when we have seen, जैसे puppet show हम लोग देखते हैं, कोई ventriloquist जैसे एक पुतले से कुछ आवाज आ रही है, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हुआ है, जो एक लिप तरह का लिप मूवमेंट दूसरे के साउंड में डाला गया है, तो उसके वजह से आपको जो साउंड, आपको जो इल्यूसरी साउंड मालूम होता है, जो वो एक्चुअली असल में नहीं है. तो अगेन ये ब्रेन आपका बाइंड कर रहा है. तो हम लोग इंटरेस्टेड थे कि कौन सा ब्रेन एरियाज इसमें इन्वॉल्व है. तो इसके लिए हम लोगों ने दो तरह के स्टडीज किए. एक स्टडी है आपका जो एमआरआई स्टडीज होते हैं, जिसको हम जैसे मैंने बताया आपका ब्रेन का एक्यूरेट पिक्चर मिलता है. तो उसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इमेजेस जो है ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इसमें टेक्निक्स जाते हैं ये इमेज करने के लिए, जनरेट करने के लिए. तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जैसे कि ये एरिया जो है ये हम लोग एक मिनट, इसमें ये एरिया को हम लोग मल्टी सेंसरी एरिया बोलते हैं. तो जब हमारा इल्यूसरी साउंड है वो जो था, तो दैट इज मैक्सिमल, ये एरिया में हमें ज्यादा kind of activation मिलते हैं, versus compared to if the sound was, if I didn't show you that part of the stimuli where we tested it with also when the sound were congruent, there was no illusory sound, and these people were always good to, they could hear properly, they could accurately identify any sound otherwise which were congruent, which was not dubbed right wrongly. So and with EEG we could actually look at the brain areas, as I said, how the activations change in time more frequently, and we can make these beautiful movies. And what you see here, these red sort of plots are, it's changing in time, how the activations of these brain areas are changing in time when you are perceiving that illusion. जब वो illusion आपको मतलब आपका brain बना रही है आपके mind में, तो आपको आपका brain का जो dynamics है इससे हमें पता चलता है. और ये खाली dynamics ही नहीं है, इसमें और एक चीज हमें पता चलता है, ये
डायनामिक से कि जो क्रॉस टॉक है, जो ये एक रेड एरिया जैसे जो एक्टिव है दूसरे जो एरिया से कैसे बातचीत चल रहा है, इन दोनों का बातचीत कैसे चल रहा है, ये भी हम लोग एक क्वांटिटेटिव तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से हम ये मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो स्पीच परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं, जो बातचीत का जो जब सवाल आती है तो हम लोग जब एक इंडिविजुअल लेवल में ये परसेप्शन की बात करें तो हम अगर पूरा जो सब्जेक्ट ग्रुप जिनके ऊपर से हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग किया था उनको डिवाइड कर दे, रेयर परसीवर जिसको कम ये इल्यूशन पता होता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद ये इल्यूशन पता भी ना चले, तो उन लोगों का कैसे ब्रेन काम करती है वर्सेस जो लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये इल्यूशन पता चलता है उनका ब्रेन कैसे काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो अल्फा वेव्स जिसके बारे में मैंने पहली बार बताया था कि जो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी में जब हमारा जो कम्युनिकेशन चलती है जिसका जो जितना स्ट्रांग इल्यूशन है उतना अल्फा उसका कम है, मीनिंग अल्फा इज समवॉट इनवर्सली कोरिलेटेड विद द परसेप्चुअल इल्यूशन। दैट वाज द मेजर फाइंडिंग वी कुड से फ्रॉम द individual variability aspect. So people will have variable degree of perception. And what does this mean? So for example, आप एक चीज सोच के देखिए, कोई आपको बताया ये रेड है, कोई बताया ये रेड नहीं है मैरून है, कि दूसरा ने बताया कि ये मैरून नहीं है मोयाव है। तो ये जो हर तरह का जो कलर्स है वो हमेशा एक जगह होता है कलर का जो कि सिग्नल डिफरेंट वेवलेंथ से आती है, दूसरा जो जगह है कलर का वो हमारे माइंड हमारे ऊपर क्रिएट करती है, जो इसके तरह से किसी को बहुत ज्यादा कलर का वाइब्रेंसी जो हमें पता चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है, जो ये स्पीच परसेप्शन के जहां पे लोगों को ये इल्यूसरी परसेप्शन जहां पे जिसको आ रहा था वो भी आ रहा था ये अल्फा परसेप्शन के लिए, अल्फा रिदम में कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ अल्फा कम्युनिकेशन। तो नाउ लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। तो एक एसोसिएटेड क्वेश्चन इज वेल हाउ डू अटेंशन चेंज ऑल दिस, मतलब आप अगर ये अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं या अटेंटिवली सुन रहे हैं किसी का बात, उससे आपका क्या चेंज करते हैं। तो अटेंशन के साथ ये न्यूरल ऑसिलेशंस जो जहां तक मैं बोलते जा रहा हूं आज, तो उसका क्या रिलेशनशिप है। तो इसका इंप्लीकेशन बहुत है। जैसे कि आप सोच के देखिए, जब आप मैं सोच रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, तो आप जब कुछ आपका टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, सडनली कुछ फोन का आवाज आया तो सडनली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर कुछ आपका कुछ नॉइज आया बाहर से तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन आपका एग्जाम सामने है, आपको पढ़ना है, आपको रीफोकस करना है, तो आपका ब्रेन वो रीफोकस करने के लिए आपको मदद करना चाहेगा, राइट। सो दिस इज द वे दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड अटेंशन। सो वन काइंड ऑफ अटेंशन इज द अटेंशन दैट इज विथ which you are studying. For example, that we call the top down attention, because this attention let you pass the exam, score something and make a career out of whatever, right? So and the other kind of attention also is important. Suddenly कुछ आ गया, सोच लीजिए कि भूकंप आ गया कि आपको घर से भागना पड़े, तो ये वो एक दूसरे तरह का अटेंशन है कि वो आपको रेस्पॉन्ड करना है कि इमीडिएटली जो साउंड आ रहे हैं वो एक तरह से कभी कभी वो डिस्ट्रैक्टर है, जैसे कि आपका एक मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्टर है, लेकिन सच में कुछ आग लग गया, कुछ हो गया, तो आपको भागना है रूम से, तो वो डिस्ट्रैक्टर, तब वो डिस्ट्रैक्टर नहीं है, तो आपका सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो हमारे ब्रेन जो है, तो कैसे इसको पता चलता है कि कौन सा सिग्नल डिस्ट्रैक्टर है, कौन सा सिग्नल से आपको रीओरिएंट करके आपको फिर से वापस लाया जा सकता है कि आप फिर से आपका स्टडी में ध्यान दें। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये भी हम लोग न्यूरल ऑसिलेशंस के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। तो दो नेटवर्क्स होते हैं ब्रेन में जो पोस्टुलेट किया गया है कि इसमें एमआरआई स्टडीज के माध्यम से बाकी जो बाहर के वैज्ञानिक है वो ने देखा है कि ये डोर्सल अटेंशन नेटवर्क है और एक वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क है। ये ब्रेन का जो मैंने कलर किया है, ये जो डिफरेंट एरियाज है, जो ऑरेंज एरियाज, एंड दिस इज फ्रॉम दिस पेपर इन नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस। ये जो एरियाज होते हैं जो ऑरेंज कलर के, दिस आर पार्ट ऑफ दैट टॉप डाउन अटेंशन, जैसे कि जिसके लिए आप जो आपको चाहिए एक्टिवेट होना तो कि आप पढ़ सकते हैं कोई और, या फिर आप गोल में आप गोल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कहां पे कहीं से कहीं पे जाना हो, कहीं कोई भी चीज करना हो।
सेकेंड जो नेटवर्क है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल अटेंशन नेटवर्क, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में कलर किया था। तो इसमें ये एरियाज क्या करती है, ये एरियाज आपका जो डिस्ट्रैक्टर सिग्नल, जैसे कोई मोबाइल फोन का साउंड हो गया, कोई थ्रेट सिग्नल हो गया, तो ये जो सिग्नल को ये सेंस करती है और आपको ये फिल्टरिंग एक मैकेनिज्म होता है। ये पूरा प्रोसेस हमें अभी तक पता नहीं है, ये फिल्टरिंग प्रोसेसिंग ये कैसे होता है, बट एटलीस्ट वी नो दैट दीज आर द एरियाज दैट आर involved in it, and somehow this gets filtered so that you can reorient back that to your whatever your goal was, right? So these are the kind of areas. Now these studies typically in this area were done earlier in MRI. तो हम लोगों ने EEG इसमें यूज किया, लेकिन हम लैब में कैसे यूज कर सकते? तो हम दो तरीके से सोचे कि एक तरीका होता है जो अटेंशन का, एक डायनामिक, एक स्टैटिक काइंड ऑफ व्यू पॉइंट। तो डायनामिक हो गया कि एक कोई आप डॉट्स ऐसे देख रहे हो, उसमें सडनली कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए, तो एक काम था ये सब्जेक्ट्स का इसके particular net direction of dots identify करना। तो suddenly if you will see in this particular case there will be one, this was one left to right or right to left, and this particular instance when there is a red distractor coming, so you have to ignore the distractor and fixating and report which is the net direction of the dot. In the case of the static task, it is the one particular cross, in this case this plus sign was shown. So the job of the subject was to see whether the sign has changed location from here to here. So in this case it didn't change, it changed from this only here to here in the left side of the hemifield, but it didn't go here. But in some cases the distractor came, such as those two kids playing soccer. So those are the salient distractors that you have to ignore. So what we discovered that both these situations, such as in the case of dynamic which is changing rapidly versus looking at a picture, हमारे जो static task जो saliency related task है, जब कोई distractor आती है तो हमारा जो ये alpha waves है ये इसका energy बढ़ जाती है। यहाँ पे आपने alpha waves मैंने similar तरीके से plot किया Fourier transforms। यहाँ पे alpha waves आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टास्क में जो सेलियंसी था, डिस्ट्रैक्टर था, उसमें एनर्जी बढ़ गए। तो ये हम लोग ब्रेन नेटवर्क में भी देख सकते हैं। ब्रेन नेटवर्क के अंदर कैसे एक ब्रेन नेटवर्क, एक ब्रेन एरिया किसको स्ट्रांगली दूसरे ब्रेन एरिया के साथ कम्युनिकेट कर रही है, और हमें यह पता चलता है जैसे कि इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि जब आप सेलियंसी प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग क्रॉस टॉक बातचीत हो रहा है ये तीन ब्रेन एरिया में, जो कि जब गोल डायरेक्टेड नॉर्मली आप स्टडी कर रहे हैं वैसा सिचुएशन में नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा एक पब्लिश रिजल्ट है, वो 2021 में, ये मेरा PhD स्टूडेंट का काम था। Now this is something that we learn from brain which are doing different kind of tasks. Now there is a lot of research that has been going on recently. So in a lot of patients you cannot do certain tasks because of their situation, because they may not have attention, they have problems and all sort of things, you know. So abhi and particularly on the other hand side, you can also think about the situation in general in a day. You are not doing a task, you are most of the time you are sitting relaxed, maybe thinking about something, daydreaming, maybe thinking about what you will cook in the night, or maybe you know what you are going to eat for lunch, all sorts of things. But there is a brain, as I said earlier, that Einstein's brain and your brain is always active all the time, and there is a basic level of metabolism going on in the brain. So can we understand this basic level of metabolism or some kind of changes in the brain which are making everything stable, so that it allows us to function in a normal daily routine, that we kind of go to our office and sit and you know don't go crazy hearing some news or whatever, राइट तो इसको हम लोग, एक साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, जैसे एस्ट्रोनॉमी में डार्क फिजिक्स, डार्क एनर्जी होते हैं, कि जो एक डार्क एनर्जी का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स में हमारा एक डार्क एनर्जी है वो बैकग्राउंड में है। ये सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, ज्यादा एनर्जी आपका ब्रेन का मेटाबॉलिज्म का इसी में कंजम्पशन होता है जबकि कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे हम लोग मेजर कर पाए? तो fMRI में देखा गया कि ये जो सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन, if you just look at a brain at rest, not doing anything, not kind of the task that I was showing you till now, some parts of the brain are correlated. So these are not areas that are active in terms of the neural sense, but the correlation between these areas seems to be very strong, meaning they can communicate with each other during this time of rest. So hence we call these areas as the resting state networks of the brain, जैसे जो हमारे रेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, और रेस्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है क्योंकि हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म
रिदम उसी वक्त में होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो रेस्टिंग स्टेट जो अल्फा रिदम है, ये भी हमारे एज के साथ साथ, मैंने पहले जो एक डेटा दिखाया था वो चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ कि अल्फा रिदम कैसे रेस्ट के साथ चेंज होते रहते हैं। Interestingly, when we look at the brain network, which is the how the brain areas are communicating to each other, and these are a little bit like, you know, the advanced physics concepts we are using here, which is called this phase locking. So when we have the phase, which is the phase of the particular sine wave, if we measure how the phases or relative phases are changing all over the brain, at that peak alpha frequency, every individual has a peak alpha frequency, let's say, which is 10, maybe 9, maybe 8 for me, 9 for you, whatever, right? All these communication at that alpha frequency, at the peak alpha frequency, is not changing with age. As if, जैसे कि जब बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं जोर से ट्रेडमिल के ऊपर, तो हम लोग वो ट्रेडमिल में स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर ट्रेडमिल का स्पीड आप सिमिलरली आप एजेड लोगों के लिए करोगे तो कोई बंदा गिर जाएगा। सो सेम प्रिंसिपल में, बट even an aged people can do the treadmill but on a slower speed. So same principle हम इसमें देख रहे हैं कि functional integration जो communication के माध्यम से होता है across this brain oscillation, that is very stable as we age, but the frequencies may be decreasing. So we can use, you know, high school even physics concepts like how pendulums are connected with each other to explain this sort of, you know, kind of conceptual framework. We do involve a lot of, you know, actual data that are coming from structural part of the MRI, and I am not going to go in the details of this slide because it is heavily mathematical, but nonetheless we can use the concept of pendulums as if each pendulum is generating a wave in your brain area and these waves are communicating with each other, and that premise we can use this kind of simple computational models with which we can study the system, and we can do this over big set data sets. So आज के डेट में ये आप इसमें AI and ML tools भी लगा के इसमें देख सकते हैं कि कैसे, and you can also use this kind of models through these AI ML kind of techniques to predict about certain situations, certain kind of diseases. So I think I'm going to end here. So that is all I had to say. I gave you an overall description. I wanted to thank a lot of people here who are my students over the years who has been assisting me, and of course it's important to thank where the money came from for all this work that we love doing, and one main source of funding is Department of Biotechnology, which has given me this IOIBA and Ramalingasamy awards, as well as Department of Science and Technology, which has funded our postdoctoral fellows, as well as SERB, which has funded our postdoctoral fellows. Ministry and Youth Affairs and Sports have also given us money to understand inflammation in boxers, जो कि एक आज के डेट में अहम स्पोर्ट्स है इंडिया का, और finally Bill and Melinda Gates Foundation for understanding and developing new technologies for MRI. With that, I would like to thank again Dr. Gagan Gupta and the rest of the team here at NCERT for conducting this. थैंक यू वेरी मच। मन कर रहा है सुनते ही रहें। बहुत कुछ आपने बताया। एक सेशन बहुत कम था, बिफोर आई गो फॉर द क्वेश्चंस व्हिच यू आर रिसीविंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स, I'd like to ask some certain things. See, you talked about perceptual bounding and multisensory systems. We did this experiment. We also performed this experiment, this kind of experiment to correlate, and I was able to make it that our results are correlating with what you are showing. We try to measure the reaction times through simple pen dropping or skill dropping exercises, and we find the differences occurs, the reaction time changes with age, not only with age, with sex as well among the children. We have found that among the girls, the reaction times are lesser than the boys up till the age of 14, and beyond that it remains same for all. So that is the correlation probably with what you are saying, the multisensory organs. Now then you talked about illusions. So illusions are two kinds which you mentioned here. One, the different sides of the brain contact each other, communicate each other, and then another kind, then one after the other. The two eyes are getting different signals, etc. This kind of impressions you had given during this your talk. So does it also dependent on time factors? I mean, does it take some time
in reaching to these illusions? This is the question. Yeah, that's a great question. Actually, this is something, of course, due to the interest of time, I didn't show the experiment, but we did that experiment. So how does time is involved? So how do you do that? Simplistically, आप एक सोच के देखिए कि आप आज के डेट में हमें Netflix या OTTs के वजह से बहुत सारे फॉरेन मूवीज देखने को मिलते हैं, YouTube में भी मिलते हैं, जो कि डब किया गया हो. Yes. तो आपको आपका ब्रेन का ऑटोमेटिकली क्विकली आपको पता चल जाता है अगर डबिंग बैड है. डबिंग बैड क्यों है? क्योंकि वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. जब लिप्स में एक जगह पे होना था वो जगह पे आपका साउंड नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्विकली पिकअप कर लेती है. So this is where we kind of realize it very well, but we have shown that illusion also is valid when in a window. For example, in our experiment, we saw that when the auditory and the visual streams are synchronized or up to a certain degree, and there was an asymmetry. For example, if the visual was ahead and the auditory was kind of little bit later, it was fine. But if the auditory was a little bit earlier, there was a problem. You don't get the illusion at all. So there is a time window over which you can integrate information. So time plays a very important role here, for sure. And that is also correlated with how the brain crosstalks across this area. So this is a completely different task. And yes. Very quick question is the hearing frequencies. We often say that 20 hertz to 20 kilohertz. In this country, when we do this experiment, we do not find it so. We find that beyond 14 kilohertz, it's hardly audible at all. But this depends on sex as well and age as well. Similar to what I mentioned about the reaction time experiments. Are you guys also getting the similar kind of results through? We have not exactly done like the range of hearing ranges of this, but it's a difficult question because in our country also we have a lot of diversity. Yes. So typically the small cohorts that we collect from one particular region is not really representative of the entire country. So that is a big challenge and also a big opportunity, because the opportunity is in the fact that in general in India, and this is only one of the, also Europe is a little bit similar, we are kind of we are multilinguals and diverse by the way we grow up. We go out and we know a lot many languages versus in US or Canada people are more monolinguals. So our way of how the brain areas communicate over time will be slightly different, particularly in those faculties when you talk about language processing, not really looking at things but really looking at language processing and all that. So interestingly, there was a study done in India actually, and that was a brilliant study in which they showed that people who knew 2 languages can delay the onset of dementia. Yes. That's what. In fact, the Africa regions, statistically it is being seen that the people, those who are in African regions, they are able to differentiate it better as compared to the people in Europe or in Asia. I request Tanvi to take the children's question now. Sure, sir. These are little adults questions. Firstly, I would like to congratulate. It was a wonderful presentation. हमने बहुत कुछ सीखा brain के बारे में, and there were so many myths that you disclosed कि वो myth होते हैं and they are not reality. We have got great response on this program, so we have received certain questions. I would like to ask you those. हमारा पहला सवाल है सार्थक प्रयास का. He is asking what to feed your brain so an individual feels healthy. This is a fantastic question. So I am not an expert, but there are a lot of colleagues of mine across the country who are interested in this question of nutrition. Okay. And as we go from and this has implication for everything, like what do we feed the brain, like eat ourselves, eat physically, right, to make our brains be healthy, very communicative, so that we can perform better to grow our country. So this is a question that government is also interested in through lot of different plannings and lot of ways of funding mechanisms. So if you want to have a proposal that you want to specifically look at different kind of micronutrients. So for example, you have all heard about this millet kind of pushing of millet as a micronutrient. So it all goes to this kind of a common sort of theme. What do we feed the brain so that our brains work in a more optimal fashion? So this is, but I am not an expert. So of course the nutrition has a very
very important role to play here. Now, So a related query about it is, does meditation really help in controlling the mind? Well, I would not say does meditation really helps brain health? Definitely yes. Controlling the mind is a more sort of, More complex. It's a more, I mean, what do you mean by controlling the mind? Don't we all control our all minds as we are, as individuals? So, but certainly meditation, or for that matter, any kind of physical exercise, and this has been experimentally shown that some kind of situations that, people from Alzheimer's can at least arrest the progression, of Alzheimer's if they are exercising, and this has been shown by some groups in US, like a very simple exercise over treadmill and things like that. So exercise, meditation also is a breathing exercise of a different kind, so you can do a lot of breathing exercise which are very helpful for your lungs, for your brain, everything. Yes. That actually answers my second question. So another viewer, he has asked, बच्चों को दिमागी रूप से मजबूत और तेज बनाने के लिए क्या-क्या गतिविधियां करवा सकते हैं? So play, go out and play. I mean, go out and play. Yeah, so you have already multiplicity of answered tasks. that. Yeah. Yes. And this question has been asked by Hemant Chokiyal from Rudraprayag, Uttarakhand. So people all across India are watching this program. So you want to ask one of the questions by the students? Yes, I mean, the question is, see, एक व्यक्ति मरने वाला है, उसको लग रहा है कि जाने वाला है, अब उसको क्या एहसास जो हमें लग रहा है कि अभी जाने वाला है, because of this ECG and etc. क्या आदमी, क्या उस व्यक्ति को कभी एहसास हो पाता है कि बस खत्म कहानी? So probably not, because what do you mean by dead? So dead means clinically you are dead, mean your brain is stopped sort of communicating to your mind. First of all, this brings a very interesting topic here, that whether your brain is different from your mind, or is it a mind is a different entity than the brain. So this concept itself is a bit philosophical, and René Descartes, one French philosopher, first proposed this idea of dualism, the way that the mental processes can never be broken down to physical processes. But if you look at our Indian sort of way of thinking also, even in the level of Advaita Vedanta, so we have talked about how all the conceptual, so brain and mind is the same thing. So if you believe that brain and mind is the same thing, then of course you can't really feel anything after death, or so of course you cannot feel about your death. So no feeling cannot be there, even from the philosophical perspective. But of course, clinically, most likely no. आपने indirectly बात की अपने सेशन में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, और सेम लड़ाई चलती है दिल की और दिमाग की, कि भाई दिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दिमाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारे देश में ब्रेन डेड को डेड माना जाता है, लेकिन हम लोग तो दिल से ही चलते हैं. जब तक हार्ट बीट है तब तक चलता है. इवन वेजिटेटिव स्टेट्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं समझने में कि क्या करें. तो थोड़ा सा दिल और दिमाग की लड़ाई के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए साहब. हाँ, तो देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ब्रेन certainly controls our heart, and also heart in turn you have to have a heart pumping so that the blood goes in all the vessels of the brain properly. So it's a symbiotic relationship, it's a couple relationship. You cannot tease out the one and look at the other in some sense. That's what we are slowly understanding now, but certainly more likely that if you stop the operations of the brain, the heart will not stop pounding typically, unless in those kind of situations where you are artificially pumping the blood. So that is the thing that you have to understand. So, and certainly जो हम लोग regular conversation में बोलते हैं दिल से काम करते हैं, वो actually हम लोग बोलते जो चीज है दिल से काम, वो दिल से काम करने वाला नहीं है. जो आपका इमोशन गाइडेड टास्क है उससे हम कम, वो भी एक्चुअली ब्रेन से ही गाइडेड है. जो दिल से काम करने वाला चीज है वो जो हार्ट रिदम्स आपका ब्रेन में जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और हमारे लैब कर रही है. आई विश कि कभी अर्पण मुझे अपनी लैब में रख ले, अपने साथ रख ले, और मैं भी अर्पण जी आपके साथ काम करूं. मुझे आज लग रहा है शायद 30 साल पहले मुझे मौका, 40 साल पहले मौका मिला होता तो मैं इस एरिया में आ जाइए कभी एटलीस्ट. मैं लेजर्स में काम करता था.
बिल्कुल. Anyway. Sir, I think the questions are never no, ending. हमारे there are पास many बहुत questions. सारे questions हैं, but we don't have any more time left. Sir, thank you so much for being a part of this program. It was wonderful having you, and we have received such great response for this program, and we have a lot of questions, but due to the time constraint, we can't. So, thank you so much for being a part of this program. Thank you. Thank you all. And thank you all the viewers for attentively listening to this show. Thank you. Dr. Gagan Gupta, thank you so much to you too as well for bringing yes. him along and for making this program a super success. Thank you. थैंक यू, मुझे तो बहुत मजा आया तन्वी जी. थैंक यू. हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का भी. हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे सवाल मिले. इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगला कार्यक्रम हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और उसकी डिटेल्स भी आप तक पहुंचेंगी. पर तब तक के लिए आप अपनी सजेशंस हमें भेजते रहिए. अपने टॉपिक्स जिन पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, हम गेस्ट इन्वाइट करें, वो भी हम तक पहुँचाते रहें. और इस आज की प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज का जितना भी इलस्ट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पर, वो सब कॉपीराइट मटेरियल है NBRC का, दैट इज नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड जाने से पहले एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहेंगे, दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज G20 presidency. Well, we are extremely proud of the fact that India assumes G20 presidency and would convene G20 Leaders Summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say, the world is one family. With that, we are wrapping up this webinar series, Listening to Learn, session number 52. Thank you so much once again. Please take care. Namaskar.